Mm. अच्छा ये स्लाइड इज स्लाइड विजिबल देखा होची Yes, sir. ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज इज इट विजिबल Yes, sir. ठीक है हाँ your subject code is MCS-01 to 12 computer organization and assembly language no? Before going to this we'll discuss what is exactly computer तो पता है ये सब थोड़ा बस बता देंगे computer is an electronic device is capable of taking input process it store it and uh, gives result as output है कि नहीं so actually what is computer architecture what is computer architecture so actually what is exactly architecture means any structure the complex or careful design of structure of something anything का उसको बोलेंगे architecture उसके बाद अर्ली डेज में कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा था इस तरह लाइक दिस कंप्यूटर इज लाइक दिस पहले फर्स्ट जब कंप्यूटर डेवलप नहीं हुआ था देयर आर डिजाइन स्पेसिफिक टू डू स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप हुआ था इनमें से एग्जांपल अगर लेंगे कैलकुलेटर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर इट टेक्स आल्सो इनपुट प्रोसेस इट एंड एग्जीक्यूट्स इट and gives result as output. But a calculator is a fixed program computer बोल सकते हैं. It performs a particular task that is mathematical calculation. But computer is a particularly versatile machine means it can perform any variety of tasks from calculation to scientific research, from weather forecasting. Then go to what do you mean by store programs? हाँ, पहले क्या हो रहा था फर्स्ट only data stored in this type of fixed program computer जैसे calculator data only data stored in your memory in this memory but in stored one program concept is developed by exactly John von Neumann तो what is stored program concept में both हम लोग जो डाटा लिखते हैं जो सॉरी हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोग्राम लिखते हैं to operate on that data both data as well as the programs are stored in the memory. This concept is known as stored program concept. It is important for 2 marks question. Therefore, it is reprogrammable. So, we introduce a structure that is known as von Neumann architecture. According to von Neumann architecture, actually our computer system is uh, divided into several units. First one is input unit, second one is central processing unit,
third one is output unit, fourth one is memory unit. दिखाई दे रहा है ना इसे? मैं शेयर जो कर रहा हूँ, इज इट विजिबल? हम्म Yes, sir. The input unit is responsible for taking data from outside world. It takes data from users and give to the central processing unit. Huh. In input unit, according to von Neumann architecture, in the input devices, examples of the input devices are keyboard, mouse, etc. Input. It takes data from outside world or from user and gives to the computer or CPU. Then, what is the another function of the input device? Whatever we are typing in the keyboard, exactly, hmm, that is converted into first ASCII code, because all the computers are digital computers. Nowadays, maximum computers are digital computers. The computer can understand only binary numbers, hmm, machine level languages. Uh, love string of binary numbers. So it exactly whatever we are writing, whatever giving data to the computer, it is not understandable by the computer. So it is converted into binary number. First of thing, in कीबोर्ड, टेक एन एग्जांपल, कीबोर्ड में हम लोग अगर ए कैपिटल ए प्रेस करते हैं, वो क्या होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट ASCII कोड, that is 65. Then it is converted into binary numbers. That's right. That actually those data are given to the central processing unit. Again, CPU. CPU is again divided into three subunits. One is control unit CU, arithmetic and logical unit ALU, and a register memory. Register. इसमें बहुत टाइप्स ऑफ टेम्पररी मेमोरी होता है, रजिस्टर मैं बोलूँगा. Then what is the function of this CPU? Central processing unit. Now arithmetic units are those type of subunits. It performs the arithmetic and logical operations. Arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. And logical operations like and, or, not, XOR, इस तरह बहुत सारे काम original. ये सब circuits होता है. What is the what are the functions of control unit? It coordinates all the units present in the computer. जिसमें इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, इसको कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा. इट टेक्स डाटा फ्रॉम इनपुट यूनिट and provides to the ALU, and it stores the temporary results in the register and stores the result in memory unit and gives the result to the output device. So actually coordinates all the things. So then what is the function of memory unit exactly? मेमोरी यूनिट का काम यही है. मेमोरी का काम क्या है? इट स्टोर्स द डाटा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू von Neumann स्टोर प्रोग्राम concept, it also stores the instruction for the operation to be done. What are the different operations to be memory unit? Memory unit में two types, more than generally two types of memories are there. Broadly two types of memories are there: primary memory and secondary memory. So this is बाद में पढ़ेंगे. So register. What is the function of this register memory or register memory? Means these are the registers which these are the memories also. It stores the टेम्पोररी रिजल्ट. जैसे कि बहुत सारे है, एक प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर एक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर इन रजिस्टर. In output devices, this unit is responsible for exactly output device or output unit.
It takes the result from central processing unit or CPU or from a computer and display or give to the user. With the reverse of the input devices. Okay, this will be clear. The basic concept behind the von Neumann architecture is the ability to store program instruction in memory along with the data on which those instructions operate. First thing. Second, the von Neumann architecture describes general framework or structure that a computer's hardware programming and data should follow. Third, even all the most modern computers and mobile devices are designed based on this fundamental concept. मैंने बोला आपको थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होता है I/O इंटरफेस CPU एंड मेमोरी. I/O में इनपुट इंटरफेस एंड आउटपुट इंटरफेस. जो एरो मार्क होता है, जो एरो मार्क है, दीज आर द बॉसेस. बॉस मीन्स डिनोट द एरो मार्क जो कैरीज द डाटा अराउंड. ये जो एरो मार्क है डाटा, एरो मार्क है डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो. मैंने बोला आपको इनपुट यूनिट का काम क्या है. इट इज द इंटरफेस अलाउ द कंप्यूटर मेमोरी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स डाटा टू द आउटपुट डिवाइस and allow the computer to communicate to the user and to the secondary storage devices like disk and tape drive. इसका काम ये सब है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सब डिवाइडेड इनटू कंट्रोल यूनिट. मैंने बोला आपको सीपीयू का काम है रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा एंड कंट्रोल हाउ डाटा मूव्स अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम. मैंने बोला आपको एएलयू का काम क्या है. सीपीयू रजिस्टर. मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर. दीज आर द टेम्पररी मेमोरी बोल सकते हैं. उसमें एक आता है एक्यूमुलेटर. ये 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. एक्यूमुलेटर ऐसे, एक्यूमुलेटर स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन मेड बाय द एएलयू. एएलयू में जो भी काम होता है, टेक एन एग्जांपल. इफ आई वांट टू ऐड 5 with 3, so let 5 is stored in a register, let that is B. Another data is stored in accumulator. दोनों ऑपरेशन में दोनों डाटा से कोई एक डाटा मिनिमम accumulator में रहेगा. उसके साथ 8 B मैंने लिखा हूँ. मतलब B में अगर 5 है, 3 रखेंगे accumulator में, 5 plus 3 8 हो गया. रिजल्ट आके फिर accumulator में स्टोर होगा. ठीक है. So accumulator is a special type of register which stores the result of the calculation made by the ALU temporarily. Another important thing is program counter. Program counter is a special type of register. It stores the address of the next instruction to be executed. जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा मेमोरी में होगा, लोकेशन में. एवरी मेमोरी हैज एड्रेस दैट इज नोन एज मेमोरी लोकेशन. उसका जो एड्रेस होगा नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है ये कौन सा मेमोरी लोकेशन में है, वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा. मीन्स प्रोग्राम काउंटर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर storing the address of the next instruction to be executed. ठीक है. Then another type of memory is memory address register, MAR. It stores the memory location for data or the instruction that need to be fetched from the memory or stored into the memory. Means it stores the memory location of the exactly data or instruction जो करेंटली एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस रखेगा. मेमोरी डाटा रजिस्टर और मेमोरी बफर एमडीआर और एमबीआर दोनों से कुछ भी. इट स्टोर्स द डाटा एग्जैक्टली डाटा और इंस्ट्रक्शन उधर रखेंगे. मतलब एमएआर में क्या स्टोर होगा, एमएआर में स्टोर होगा जो डाटा हम लोग को फेच करना है यूज करने के लिए, उसका वो जिधर स्टोर हुआ है उसका एड्रेस रखें. एक्चुअली डाटा किधर स्टोर होगा आके ना एमडीआर में. देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. It stores the most recently fetched instruction while it is waiting to be decoded and executed.
Is it clear? Any doubt? Any doubt? Then memory uses the store program concept. It can store both instruction and data. This concept is known as stored program concept. Means in memory, several storage units are there, several cells are there. Each cell has a particular address. Two types of memory होता है, primary memory RAM भी बोल सकते हैं and secondary memory. What are the advantages of von Neumann architecture? Hmm. Control units gets data and instruction in the same way from one memory. एक ही मेमोरी से मिलता है, तो सिंप्लीफाई हो गया डिजाइन उसका, different place में नहीं है. Data and instructions are stored in a common place, that is memory, and control units takes the data and fetch the data and instruction from same way from memory. कुछ अलग चीज नहीं है. एक पहला एडवांटेज है. Second one is data from memory and from devices are accessed in the same way. Third is memory organization is in the hands of programmer. Another type of architecture is there, it is not in your syllabus also. Another is Hubbard architecture. And what is the summary of this? Now, von Neumann architecture का summary क्या हो गया? Now, von Neumann architecture is based on the stored program concept. First point and important one, it has three main components. For all modern computers still use this 70-year-old fundamental concept. बहुत पुराना है, फिर भी आज तक यूज has its own advantages and its ability to alternative architecture. तो किससे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है? हाउ इन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड? टेक एन एग्जांपल. वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द सी प्रोग्राम. राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर ऐड करेंगे. लेट ए इज 5 एंड बी इज इक्वल टू 2. फर्स्ट लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच मेन फंक्शन. उसके बाद डिक्लेयर करेंगे फोर्थ लाइन में लिखिए इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 2, सी. One second. Is this visible? Is this visible? जो सब नया जॉइन किए हो, नाउ इट इज विजिबल. जो बाद में जॉइन किए हो, राइट योर एनरोलमेंट आईडी एंड योर नेम. ठीक है. ओके.
फोर्थ में हम लोग लिखे हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 एंड c। हम जब डिक्लेयर, वी हैव डिक्लेयर्ड 3 वेरिएबल हियर, मतलब इट इज जस्ट 3 मेमोरी लोकेशन, one name is a, second is name location b and third name variable मतलब क्या है, the name of the memory location exactly। so c is equal to a plus b, c में तो it is return। देखिए each instruction has particularly every instruction whatever we are writing exactly it has two parts, one is opcode, full form is operational code, means it defines or it specifies the what type of what the operation to be done in the operation that is to be performed by the instruction, and second one is the address of the operand in the memory on which given operation is to be performed. To each instruction of the machine consists of two components. One is opcode, second is operand. Operand मतलब it may be data, it may be any address. Opcode क्या है ना? It is a operation code that specifies the operation that is to be performed by the instruction. देखिए लेफ्ट वाला इसमें any instruction का फॉर्मेट क्या है? opcode, left part and the right part is operand address. What is the data format? Data is two things, one is negative data or positive data, sign उसका है, then the value of the data means magnitude of the number. It is what is the instruction cycle, एक कैसे एग्जीक्यूट होता है, what are the different steps, तो कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट थिंग तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, स्टेप्स क्या करना है, कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, वो कैलकुलेट करेगा किधर से ना, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट, कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, मीन्स फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर इट टेक्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कैलकुलेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, गेट द इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू रजिस्टर, कौन करता है ना, मेमोरी इज एसेट एंड डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन इज बॉट टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन डिकोड दैट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मिल गया उसके बाद उसको डिकोड कीजिए, उसके बाद उसका इवैल्यूएट कीजिए द ऑपरेंड एड्रेस, ऑपरेंड जो एड्रेस है कौन सा एड्रेसिंग मोड में है इसको करके उसका इवैल्यूएट कीजिए, देन फेच द ऑपरेंड, रिपीट द स्टेप्स, जो कौन सा स्टेप से इवैल्यूएट करना है ऑपरेंड एड्रेस, देन ऑपरेंड को फेच करना है। अगर रिपीट स्टेप 4 एंड 5 ये दोनों, इफ द इंस्ट्रक्शन इज मोर देन वन ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड है तो एक ही बार फेच करेगा, दो ऑपरेंड है तो दो बार फेच करेगा, तो नंबर ऑफ ऑपरेंड के हिसाब से रिपीट होगा। देन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन डिकोडेड, स्टेप 3 में क्या हुआ था ना, हम लोग का डिकोड हुआ था, यू क्या करेगा, ये परफॉर्म जो जो डिकोड हो गया ऑपरेशन ऑफकोड से उसको परफॉर्म करेगा, कौन करेगा उसको ना, एल, हम लोग को पता है ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर डन बाय एल, उसको कौन कोऑर्डिनेट सब करेगा ना, सी यू। देन हम लोग को रिजल्ट मिल गया, स्टोर करेगा रिजल्ट मेमोरी में एंड गिव्स द रिजल्ट टू द आउटपुट, दिस आर द स्टेप। उसको एक फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं, देखिए on the top of the calculate the address, which step, first step calculate the address of the next instruction to be executed from the program counter, then fetch the instruction, then decode that instruction, then calculate the address of the ऑपरेंड, ऑपरेंड जो होता है उसका एड्रेस निकालेंगे, देन फेच करेंगे, पहले एड्रेस मिलने के बाद उसको फेच करना है, फेच करेंगे, विल फेच द ऑपरेंड, देन अगर मोर देन वन ऑपरेंड है, मैंने बोला था कि आपको कि सर इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेंड तो रिपीट होगा दिस स्टेप, यस, फिर कैलकुलेट करो एड्रेस, नेक्स्ट ऑपरेंड का, फिर फेच करो, जितना टाइम जितना ऑपरेंड है उतना ही एड्रेस, नेक्स्ट इफ देयर आर नॉट मोर ऑपरेंड, कंप्लीट हो गया इतना, देन क्या होगा ना, जो इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है डिकोड हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन
देन परफॉर्म द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन होने के बाद हम लोग को रिजल्ट मिल गया, स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी। इफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट, अगर कंप्लीट है लोड द अनदर न्यू प्रोग्राम इन द मेमोरी। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है फिर जो जो स्टेप शुरू से हम लोग किए हैं फिर उसको रिपीट करें डाटा। दिस आर द स्टेप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये तो पूरा हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर है। आज जो भी कंप्यूटर हम देख रहे हैं, जो डेवलप में देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, पहले से नहीं हुआ। तो शुरू से कंप्यूटर 1942 से फर्स्ट जनरेशन, हमारा टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग डिवाइड किए हैं। वी आर डिवाइडिंग द एक्चुअल द कंप्यूटर इनटू डिफरेंट जनरेशन। 1942 से 1959 तक हम लोग डिसाइड करते हैं दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन। हियर we are mainly principal component use, main component is vacuum tubes। हम लोग यूज कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का एक डिमेरिट्स का, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्यूर ऑफ द वैक्यूम ट्यूब इज मोर। तो जल्दी जल्दी frequency of failure is more। Second thing is the size of the vacuum tube is very large। So the disadvantages of first generation computers are these are the size of these generation computers are very large, and second thing is uh, the frequency of failure is more। Another thing is to communicate with computer we use this machine level language। Machine level language means the string of binary numbers। It is very difficult, nearly impossible to communicate with the computer with machine level language। अगर machine level 01 करके यूज करेंगे तो क्या होगा ना, यूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, वेरी कॉस्टली, जनरेट लॉट ऑफ हिट्स, यूज साइज, इसका डिसएडवांटेजेस है। एग्जाम्पल क्या क्या कंप्यूटर था, ENIAC, Edward, TBM701, these are the examples of the first generation computer। Then go to second generation computer। 1959 से 1965 तक वो जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम में जो जो कंप्यूटर था उसको सेकेंड, वो कंप्यूटर्स आर बिलोंग्स टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर इज, main component is, you have to remember the transistor is the main component। For storing the data we are using magnetic type। इधर क्या हो रहा था ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? मीन्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सिमिलर jobs are grouped together and make a batch। in the batch operating system में क्या होगा, exactly how we can execute, that means we'll similar jobs are grouped together and make a batch, and that batch file is given to the computer, but computer executes those batch file sequentially। उसमें जितना भी फाइल है, जितना भी प्रोग्राम्स है, उसको एक एक करके वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हम लोग बैच करके दिए। तो, तो उसका बेनिफिट क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, बेनिफिट इज हम बार बार देना नहीं पड़ेगा, एक ही बार विल गिव टू द input to the different programs at a time, similar types of programs at a time, but that is those are executed sequentially one after another। But demerit is, merit is an user need not to sit in front of the terminal throughout the day। बैठना नहीं चाहिए, एक बार दे दिया होगा, लेकिन वो क्या करेगा, इफ एनी एरर occurs in a particular file or particular program, it does not proceed further। फर्दर जो प्रोग्राम से ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दीज आर द डीमेरिट्स। कॉस्टली भी होता है, एग्जाम्पल से हनीवेल 400 CDC 1604। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, हाँ, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज है बहुत वेरी लार्ज, सेकेंड जनरेशन में छोटा हो गया है उसका साइज, लेकिन फिर भी लार्ज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर द कंप्यूटर बिलोंग्स टू 1965 से 1975 तक का टाइम पीरियड। इसमें एक वाइटल कंपोनेंट यूज हुआ है, दैट इज
integrated circuit. So integrated circuit जैसे use हुआ, the size of the computers have become less. छोटा हो गया. इधर क्या हुआ, कौन सा है, टाइम शेयरिंग यूज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, थोड़ा चीप है, इसका कॉस्ट फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से लेकर 1980 तक. इसमें भी आईसीजी हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन अनदर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, आईसीज विथ वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. सेमीकंडक्टर मेमोरी हम लोग यूज कर रहे थे, मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क आर यूज एज मेमोरी. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, स्मॉल हुआ, छोटा हो गया, इजी टू अपडेट हो गया. इसका एग्जांपल है Apple II DAC 9000 Cray 1/2. Then fifth, nowadays we are using fifth generation कंप्यूटर, वो 1980 से अभी तक यूज हो रहा है. हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट्स क्या है ना, आईसीज विथ यूएलआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, लार्ज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क विथ रेड सपोर्ट, ऑप्टिकल डिस्क एज पोर्टेबल, रीड ओनली स्टोरेज मीडिया, पावरफुल सर्वर्स, इंटरनेट क्लस्टर, ये सब यूज होता है. इट इज वेरी पावरफुल, चीपर, रिलायबल. आजकल रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है. आईबीएम, पेंटियम, परम, ये सब यूज ज़्यादा. हिस्ट्री जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. क्लासिफिकेशन अगर करेंगे, व्हेन वी आर क्लासिफाइंग समथिंग वी हैव टू फॉलो सम फैक्टर. फैक्टर को कंसीडर करके विल क्लासिफाई दैट. अगर टाइप के हिसाब से देंगे कैसे वो ऑपरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू, तो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. हाँ, जरूरत नहीं है. साइज के हिसाब से अगर लेंगे और कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे, कैसे काम कर रहा है, कितना स्पीड में, साइज और कैपेसिटी के माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. पर्पज के हिसाब से जनरल पर्पज एंड स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे भाई, साइज के हिसाब से डिवाइड करेंगे. माइक्रो, मिनी, मतलब मिनी कंप्यूटर एग्जाम्पल 1960 में जब रियलाइज मिनी छोटा साइज है उसका, स्मॉल एंड चीप होता है. मेनफ्रेम कंप्यूटर are generally 32-bit machines or higher. When 32-bit machines से ऊपर होते हैं. These are the suited to big organization के लिए, special के to manage high volume of application. General purpose के लिए mini and micro computer. Few of the popular names from series are PC, IBM, HP, ICL, etc. Then super computer. These are the fastest computer among all the computers. Size is also large, the cost is also more, but it is processed very faster than other computers. There are number of manufacturers. जो एग्जाम्पल कोई बोलेगा क्या क्या ना, परम है, क्रे है, IBM 3090, these are the super computers are reaching up to speed of as well as over 25,000 million arithmetic operation per second. एक सेकंड में more than 25,000 million arithmetic operation कर सकता है. Another का है नंबर सिस्टम, जो कैलकुलेट करेंगे नंबर सिस्टम में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम से, एक बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 एंड हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16. Why we are generally in computer we are using binary number system? Because now computers are digital computers, they can understand, they work on the machine level language. Finally they work on the machine level. Whatever we are given, that is converted into binary numbers or machine level language. So computers are made of series of switches. Each switch is two states, 0 and 1, or
on off, 0 for off एंड 1 फॉर ऑन। देखिए जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में, हम लोग रियल लाइफ में, हमारा मैथमेटिक्स में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो डेसिमल में यूज करते हैं उसको हम लोग कैसे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट एक है नंबर 10011, ठीक है ना, 2 लिखा गया है इधर नीचे, मतलब इट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम, ड्रेस ऑफ 2। हाँ, 1 मतलब ऑन मैंने बोला, 0 मतलब ऑफ। हाँ, तो क्या करेंगे ना, लिखेंगे इधर साइड से, देखें 1 इंटू कन्वर्ट कैसे करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, 1 इंटू 2 टू द पावर 0 और दिस राइट मोस्ट कर दिया। देन नेक्स्ट क्या है, 1 है, 1 इंटू 2 टू द पावर 1। देखिए 1 इंटू 2 टू द पावर 0 कितना है, 2 टू द पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 कितना हो गया, 2 टू द पावर 1 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इधर एक 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 3, ये भी 0, ठीक है। देन 1 इन plus 16 plus 0 plus 0 plus 2 plus 1 is equal to 19 decimal conversion from बाइनरी टू डेसिमल। मैं आपको बोला था बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का बेस 8 है, डेसिमल का बेस 10 है, हेक्साडेसिमल का बेस 16। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में वो 2 टू द पावर समथिंग हो रहा था, इधर 10 टू द पावर समथिंग, जनरली हम लोग यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में 10 टू द पावर प्लस आएगा, इसमें राइट साइड में पॉइंट डेसिमल पॉइंट के पास 10 टू द पावर माइनस आएगा, नहीं है। किसे कन्वर्ट कीजिए फ्रॉम बाइनरी हो गया, ये कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 333 डेसिमल में है हम लोग का, कैसे हम लोग उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। मैं क्या करेंगे ना, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे मतलब 2 डिवाइड करेंगे जो नंबर से, जो डेसिमल में 333 डिवाइडेड बाई 2। देखिए क्वेश्चन कितना आया 166, रिमाइंडर कितना आया 1 लिखिए, ठीक है। उसके बाद 166 जो क्वेश्चन आया उसके साथ फिर 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 83, रिमाइंडर कुछ नहीं 0 आएगा, तो फिर उसका लेफ्ट में लिखे 0 1 लेफ्ट में 0, फिर 83, 83% आया था, 83 डिवाइडेड बाई 2, देन 41, then रिमाइंडर 1, मतलब फिर लेफ्ट साइड में हो गया 101, फिर 41 डिवाइडेड बाई 2 परसेंट 20, रिमाइंडर 1, जो रिमाइंडर आएगा फिर लेफ्ट में लिखेंगे 1101, फिर 20 को डिवाइड करेंगे 2 10, रिमाइंडर आएगा 0 0 लेफ्ट में आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 क्वेश्चन 5, रिमाइंडर 0, फिर 0 बाई 2 क्वेश्चन 2, रिमाइंडर 1 फिर 1, फिर 2 क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना है प्लस 1, रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर कितना आएगा 1 1 आएगा। अभी मुझे जो राइट साइड में देखिए 101001101 is the equivalent binary numbers of 333 decimal।
फिर प्रेजेंट करेंगे। From decimal to binary, when we will convert decimal to binary, then we will divide 8. 1 second. Wait a second. Sorry. डेसिमल से ऑक्टल, कैसे डेसिमल से बाइनरी जब कन्वर्ट कर रहे थे, 2 डिवाइड कर रहे थे, सेम थिंग क्वेश्चन रिमाइंडर सेम थिंग होगा इधर। डेसिमल से जब ऑक्टल डिवाइड करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे 8 करके डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में जो रहेगा फिर 8 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में जो रहेगा लेफ्ट राइट में लिखेंगे, फिर रिमाइंडर में जो आएगा लेफ्ट में। देखिए 44978 इक्विवेलेंट इज 127662। देन पढ़ेंगे व्हाट इज लॉजिक गेट एक्चुअली। द बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज्ड टू क्रिएट digital circuits are logic. These are the combinations of transistor that performs binary logic. Okay. Types of different types of logic gates are there. One is NOT gate, AND gate, OR gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate, different types of logic gates. What is NOT gate? ये सिंगल इनपुट गेट होता है, नॉट गेट है। इसमें अगर नॉट मतलब इन्वर्टर, जो इनपुट देंगे लेट, इसका सिंबल इज लाइक दिस, देखिए ट्रायंगल लॉजिकल डायग्राम सिंबल। रिजल्ट हमेशा इन्वर्टर रिवर्स आएगा। अगर इनपुट हम लोग 0 दिए, हम लोग तो है इन्वर्टर, बिकॉज इट इन्वर्स द इनपुट वैल्यू। मतलब हम लोग अगर इनपुट ए इज इक्वल टू इनपुट, एक्स इज इक्वल टू अगर आउटपुट ए इज इक्वल टू 0, मतलब इन्वर्ट कितना हो गया 1। ए इज इक्वल टू अगर सॉरी देंगे 1, आउटपुट होगा 0। देन AND होगा, मीन्स AND गेट एक्सेप्ट 2 इनपुट सिग्नल। इधर क्या था, नॉट गेट में ओनली 1 इनपुट सिग्नल था, इधर 2 इनपुट सिग्नल है। A B, let A is an input, B is an another input, इसका सिंबल देखिए इस तरह, X is the output। तो A B, अगर AND गेट में if both the input are true then result is true, मतलब if both the inputs are 1 then result is 1, otherwise 0। A 0 B 0 हो गया, X is result is 0, 0 1 0 1 0 0 1 1, both the inputs अगर ट्रू होगा और 1 होगा तो रिजल्ट ही, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बुलियन एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल टू a डॉट b, इस तरह लिखते हैं हम लोग। और गेट बुलियन मतलब और गेट में क्या होगा, सिंबल देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, x इज द आउटपुट, इधर 2 इनपुट्स लेते हैं, लेट a एंड b, x इज इक्वल टू a प्लस b, और a और b प्लस सिंबल देते हैं, a और इसको बोलेंगे। इसमें क्या रिजल्ट होगा, if both the
If both the inputs are false, then result is false. Means both the input are zero, then zero, otherwise one. Means कोई एक input अगर one हो गया, true हो गया, the result is one. So both A zero, B zero, zero, zero one, one, one zero, one, and one one one. Then these three are the basic gates. NAND and NOR gates are known as universal gates because those can be using NAND and NOR gate. You can realize all the three basic gates NOT, OR and AND. उसको लेके हम लोग उसको रियलाइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे। हाँ, नान का एक बबल दे देंगे, नान का सिंबल, और का एक बबल दे देंगे। हाँ, ए डॉट बी था, उसके ऊपर बार दे देंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। हाँ, नोर का एक्स इज इक्वल टू ए प्लस जीरो। आन का रिवर्स होगा। आन में क्या हो रहा था, वन 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 हो रहा था, रेस्ट जीरो हो रहा था। इसमें क्या होगा, वन वन जीरो होगा, रेस्ट में वन। नॉर में क्या हो रहा था, जीरो 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 हो रहा था, रेस्ट में वन हो रहा था। इसमें क्या होगा, और का रिवर्स होगा, जीरो जीरो वन, रेस्ट जीरो। XOR गेट और एक्सक्लूसिव OR गेट बोलते हैं। XOR गेट produces zero if two the input both the input are same, then result is zero. अगर जीरो जीरो हो वन, if both the inputs are same, then the result is zero, otherwise one। देखिए सिंबल इसका x इज इक्वल टू ए, सिंबल देखिए प्लस के ऊपर सर्कल होता है छोटा स्मॉल डी। सिंबल देखिए जीरो जीरो जीरो, बोथ द इनपुट्स आर सेम तो जीरो होगा। जीरो वन डिफरेंट इनपुट से वन होगा, वन जीरो डिफरेंट इनपुट से तो रिजल्ट इज वन। वन वन सेम इनपुट से सेम टाइप का, रिजल्ट इज जीरो। इग्नोर गेट का जस्ट एक्सर का रिवर्स है, इन्वर्टर आउटर है। इन्वर्टर एक लगा देंगे तो एक्सर का हो जाएगा। इसमें क्या है, इफ द बोथ द इनपुट आर सेम देन द रिजल्ट इज वन। If the both the inputs are not same, result is zero. The reverse of XOR gate. Okay. Combinational circuits थोड़ा बता देंगे। Digital circuits whose output can be determined using the logic function of the current state input only। तो डिजिटल सर्किट से इसका आउटपुट डिपेंड करेगा करंट इनपुट के ऊपर। these are the combinational, इसको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलेंगे। एग्जांपल्स क्या है, एडर, सबट्रैक्टर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर आर द examples of the combinational logic circuit। Sequential logic circuit, then the out of the current logic circuit depends upon the current input as well as the previous output। देखिए ये वाला डायग्राम, कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्या होता है, इनपुट के ऊपर आउटपुट डिपेंड करता है करंट इनपुट। टोटल इज जो है लो में है बॉक्स में इज सीक्वेंशियल लॉजिक, मतलब करंट इनपुट प्लस जो आउटपुट ऑफ द प्रीवियस इज गिवन टू द इनपुट ऑफ करंट स्टेट। एग्जांपल्स क्या है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स
हाँ, एनी डाउट? एनी डाउट? चार्ट में लिखे थे आप लोग आपका एनरोलमेंट आईडी